Welcome to the Drawing Room Experts. This is Zaib, and with me I have Sahir joining me for yet another good discussion. How's it going, Sahir bhai? Good. How are you? Good, good. क्या चल रहा है वैसे? All good? All good. It's good to be, always. It's a good thing to join your podcast episode. Always, I always try to find time for this podcast, and whenever I can, I kind of join and give my 2 cents on the topics that we usually discuss. So it's good to have you. Uh, Absolutely. I think it's vital. Some of the discussion that I have, only a few of them are good enough कि जिसको मैं खुद अकेला कर सकता हूँ, but a lot of them do require some person to bounce off ideas to. So none better, I believe, than you. Today I wanted to talk about a few things. We'll tackle, a couple of behavioral things as well as to what my topic is about. But essentially, the context is, and you know this as well, we were discussing this the other day. Recently, there was I think the PTI government in Punjab, I believe, was commemorating 3 years in government, and they held an event to which Imran Khan was invited to, and one of the speakers at the event was none other than a PTI member and a famed Pakistani pop singer, abrarulhaq. mhm. Full caveat: I haven't heard the full speech, and honestly, I wasn't bothered to, and I'll give you my reason as to why. But a clip of his speech went viral apparently, in which he talks about the, I don't know how to put this, talks about the gulf in m- uh, child bringing up methods from his time in the whatever 60s 70s and now, How right? how how nursery rhymes have taken over, Yeah. right? and Um, and nobody knows this better than you and I mean, we are living through it right now, and God knows, how many nursery rhymes we learned, we put that at one side, and how many we're learning right now at one side. um so I wanted to discuss that, but I think the larger question that I honestly got from all of this mayhem that unfolded on Twitter and Instagram and Facebook was, I was like, every week, every day, there's someone who's it, right? I read a quote on Twitter the other day, and I found it actually really funny, which said that every day Twitter has, picks up someone who's it for the day, right? Someone who's it. Your job, whoever's on Twitter, is to make sure that you're not that it, because every day there's someone, right? There's someone who's the bullseye जिसके ऊपर target बना होता है, and then you go at it and then you move on and कुछ कोई और आ जाता है. इसी तरह का एक वाकया हुआ था. I'll give you a couple of weeks ago or so, जिसमें one journalist who's actually appeared on the podcast, Khodo, he tweeted, this was actually right after, you remember this, there was an incident in Sindh, or I think Punjab, where the a temple was burned or like attacked by some hooligans. mhm. I think शायद वो सिंध में हुआ था, Punjab, I don't remember. I think Punjab में हुआ था, because Imran Khan and the government took notice of that, and then they rebuilt that and all of that. तो उस context में Zarar Khodo tweeted saying that comparatively how minorities are treated in India, Pakistan is much better. And he cited this incident where the government took action and rebuilt um, the temple right away, and prime minister took notice, and he was saying that something like this may not happen now in India, because like you wouldn't hear Prime Minister Modi coming out and suggesting that jo hua wo galat hua, and then he but rebuilding a mosque. I mean, he's not rebuilding anything, so a mosque तो बहुत दूर की बात है. तो उसपे क्या हुआ कि there was outrage from the left, saying that they construed what he said was कि minorities in Pakistan को सब कुछ easy चल रहा है यहाँ पर सीन, उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, और ये इसलिए क्योंकि ये एक इवेंट हो गया सर. तो उस 2-3 दिन तक he was it on Twitter, जिसमें everyone was bashing him, and then he actually had to come out and say that, hey, I didn't say that Pakistani minorities have it best, or so everyone should like
consider Pakistani minorities to be the luckiest ones in the world. He said that comparatively, Pakistani minorities in certain situations, they have better survival odds, right? And the funny thing is that we always Pakistan gets compared to India when it comes Huh. to minorities or other things. They're not going to look at the other rest of the world, but there is always Exactly. there's a majority and minority. It will always be Always compared be against Indian India. Pakistan. Yep. हाँ तो Sorry. Go ahead. नहीं it's fine. तो again उस पे भी मुझे हुआ था कि चलो यार, if you disagreed with a statement, just make a counter statement, move on. But वो एक जो outrage porn जिसको मैं बोलता हूँ कि इतने we are addicted to it कि everyone wants to be outraged and they're finding reasons to be outraged. And before I move to you, one small little joke that I heard of Ricky Gervais, who basically outlines this whole idea of outrage porn in one of his stand-ups. He says, okay, people getting mad on Twitter is like, he compares that with an incident where he says that imagine you're going out for a walk in downtown, wherever, right? And you see a billboard or an ad which says free guitar lessons, right? और उसके नीचे आई नो यू सीन कि जिसका भी इस तरह का ऐड होता है तो उसके नीचे ना वो लगे होते हैं, पर्चे लगे होते हैं, लाइक नंबर आप पुल आउट कर लो एंड देन यू कैन call the person later for free guitar lessons or whatever. Said imagine that person looking at that ad, pulling out the number जिस पे लिखा है free for free guitar lessons, and then giving that person a call and saying, okay, but I don't fucking need guitar lessons. So you'd be like, okay, then it's not for you. Then Right. this ad is not for you. Move on. Why are you like, all like you have to be angry at this? So उसने बोला कि ट्विटर के ऊपर भी exactly ऐसे ही होता है कि people find reasons to be outraged when they feel like कि भाई अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं पसंद आई एक चीज तो don't look at it, don't read it, move on, कुछ और पढ़ लो. Yeah, Right? in the last 2 days, हाँ I can actually besides the whole coming to the point of abrarulhaq, but हाँ two topics in Pakistan has become an outrage topic of discussion in हाँ Twitter. One is Ikra Aziz and Yasir yeah Hussein's diaper change. right The other one is that morning show where the woman doesn't know what Formula One car is. right Fine, if she doesn't know it, right she doesn't know. right. अच्छा उस I- पे भी बताऊं, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं. अच्छा वो एक, it was obviously people treated that as a joke and so it should be. It's not a एक औरत versus man वाला चीज नहीं थी वो. It was just like a stupid person asking stupid questions. तो or उस an पे भी ignorant person, ignorant, हाँ, asking right? stupid questions as you Right. would expect, right? But it was not just it was a host of a show, so obviously you would probably expect better कि यार आप किसी को invite करो तो थोड़ा सा तो पढ़ लो कि किस चीज से बात करो. तो उसमें क्या हुआ कि a lot of people I saw लोग कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये रिवर्स होता, अगर कोई बंदा बैठा होता and he asked stupid question about something women centric, तो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते. तो निदा यासिर को फॉर एग्जांपल फार्मूला 1 के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली लोग मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि शी इज अ वुमन एंड शी हैज टू नो मेंस स्पोर्ट्स. शी डज. आई मीन आर यू किडिंग मी? लाइक दैट्स नॉट अबाउट लाइक men's sport or women and It's all of that. about you hosting a show and inviting a guest. Just do a little bit of research before you do it. I Oh mean, I yeah. think that कोई इसकी और किसी ने ये नहीं बोला कि आप पूरा क्यों पढ़ के आ जाओ गाड़ी कैसे बनानी है. लाइक एटलीस्ट नो कि यार उसने कौन सी गाड़ी बनाई है और ये क्यों है, एंड देन आस्क ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस फ्रॉम योर रिसर्च टीम जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे. यार फॉर्मूला क्या, मतलब व्हाट इज देयर अ फॉर्मूला या क्या, व्हाट्स द थिंग. तो एनीवे, तो A square plus B square equals C square. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो वो इतना आउटरेज हमारे अंदर वो चीज आ चुकी है. तो वांटेड टू डिस्कस नंबर वन, लेट्स गो बैक टू अब्रार. नाउ व्हेन आई नो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ये चीज आई थी and we listened to it. I didn't remember like we exuberant reaction from anyone from the group. People saw it and then moved on. What was your reaction when you saw that video? Nothing. Right? Like Like literally, it was okay, fine. okay. His mom Huh? did something to put him to sleep. Right. Exactly. And then तो मुझे मुझे इतना वो और लगा. अच्छा लोग उसकी साइंस बना रहे हैं. मैंने एक शो देखा जिसपे this woman was discussing Abraham Huck's incident. And तो इतना उसको like उसकी साइंस इतनी बना दी कि she said कि if that was the right thing, for example, क्योंकि अब्रार लक ने इस तरह से बोला कि जैसे कि वो जमाना अच्छा था क्योंकि उनकी अम्मा जो है ना पहला कलमा तैयब इस तरह के सुना के बच्चे को सुलाती थी. रिलीजियस समझ लो कि सॉन्ग्स वो पढ़ती थी बच्चे के लिए.
तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने बोला कि यार ये जो अभी जितने रेप्स हो रहे हैं और जितनी बुराई उसके अंदर है, ये उनकी अम्माओं ने तो वही पढ़ाया था उनको, अपेरेंटली, अगर आप ये बात देखें। तो इससे फर्क क्या पड़ा, राइट? इससे कोई पॉजिटिव फर्क? तो मैंने कहा चलो ठीक है, एट अ लार्जर स्केल योर पॉइंट इज राइट, बट आई वाज लाइक व्हाई आर यू इवन delving इनटू दिस डिस्कशन? दैट वाज नॉट समथिंग दैट ही इनवाइटेड, क्या रे? तो मैं तो उसको कोई उस पे ला ही नहीं रहा था कि रेलेवेंट कोई चीज है, ही इज नॉट अ कोई पब्लिक। importance in it, yeah. It was हाँ, like, right? I mean, how? Okay, so this is what I usually think about certain things, right? So I'm guessing Abrarulhaq is probably in his. I mean, I don't want to make a. I'm just going to make a guesstimate. He's probably in his close to his 50s right now, right. right? I'm pretty sure that's Right. pretty fair, So huh? because when I was a teenager, growing up in, like, in O levels or maybe less than that, that's where I heard the Pillow song, right? Right. So that means he was around in his 20s at that time, right? So now बिलो it's, के में 90 मिड 90s में आया था बिलो, चलो आप उस इमेजिन कर वक्त लें। हाँ, मैं कोई 8-10 साल का होऊंगा, हाँ, राइट? राइट। तो मतलब अब उसमें भी मैं भी अब कोई अच्छा खासा 36 का हो गया हूँ। तो मतलब कि इस बात को अब 20-25 साल तो हो ही गए, राइट? राइट, So राइट। if I just add his, anyways, guesstimate, he's around his 40s, 50s, right? हाँ, So if that being said, right, people are born in certain eras or certain decades or certain, those 90s or 80s or 70s, where you have certain means available to do certain things, राइट। right? जैसे अभी कहते हैं ना, हम लोग के माँ बाप ये कहते हैं कि अभी बच्चे इतने, इस जमाने के बच्चे इतने जबरदस्त शार्प हो गए कि उनको टेक्नोलॉजी यूज करना आती है, राइट? मेरा बच्चे को अगर मैं फोन पकड़ा तो उसको यूट्यूब के वो चैनल चेंज करना आता है, हालांकि वो 2 साल का भी नहीं है, राइट? राइट, राइट, सेम। व्हाट? बिकॉज दे आर बोर्न इन इट। जैसे ये आप उनकी, अगर ये उनका नेचुरल हैबिटेट है, दिस इज नेचुरल व्हाट। हैबिटेट, एग्जैक्टली, राइट? हाँ, आप 25 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले जो बच्चा पैदा होगा, जब आपके पास वो फोन होता था जिसमें आप घुमाते थे, घुमा हाँ, घुमा के करते थे, एनालॉग फोन जो he होता था। has seen his parents, his brothers and sisters, his grandparents using that phone, so वो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है। या वीसीआर चलाना, अब सोचो या आज के वीसीआर किसी बच्चे चलाना, को प्ले वीसीआर चलाओ, करना। कोई नहीं चला सकता वीसीआर। वीसीआर छोड़ो, आप 1995 का विंडोज का पीसी ऑन करवा दो किसी 484 या 486 जो हाँ, पेंटियम होता है, वो हाँ, उनको हाँ, पावर का बटन यूज करना नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली, वो लैपटॉप का जनरेशन, राइट? तो एग्जैक्टली। उसी तरीके से मैं इस बात को ये लेता हूँ कि जब अबरारुल हक की अम्मा, या उस जमाने में अम्मा बच्चों को सुला रही होंगी, उनके पास कोई दूसरे मीन्स नहीं होंगे। हाँ, उस वक्त टीवी पे चैनल भी एक ही आता था, पीटीवी। अब हाँ, अंकल सरगम आते थे उस वक्त, उनको तो कोई बच्चा देखे डर जाएगा, राइट। और क्या राइट? वो एक ललवाइज होती पपेट एक होंगी। एक हिल रहा है तो उसको देख, उनको तो नहीं दिखाएंगे ना, या मिली नगमे तो नहीं सुना के बच्चे को सुनाएंगे ना। अब जो उनको उस जमाने में जो जिस तरह से बच्चा सो रहा है, वो दे आर यूजिंग दैट अगर कलमा याद आ रहा है, या आपको सूरह फातिहा आ रही है, या हम्म। कुल याद आ रही है, या एबीसी पढ़ना आपको आता है, जिससे बच्चा काम डाउन हो रहा है, वो सो रहा है, वो उनका मीन्स है। अच्छा, मैं एक और इस पे चीज है, बच्चे को लिरिक्स समझ में नहीं आते, टू बी फेयर एंड फ्रैंक एंड हाँ, ऑनेस्ट, वो मेलेडी का बच्चा है। वो सही है। मेलेडी या टोन सुन रहा है, या किस हाँ, वो काम से आप मेलेडी कर रहे सुन रहा है, तो अगर आप वो मेलेडी, जो बच्चे को आप कह रहे हो ना कि वो कलमा पढ़ के बच्चों को नींद आती थी, कलमा सुन के नहीं आती थी, एक्चुअली उनको मेलेडी सुन के आती थी। आप वही मेलेडी आप बेबी शार्क की बना दो तो उनको उससे भी नींद आ जाएगी। तो या उल्टा करो ना, हाँ, आप उल्टा आप कर दो, हाँ, आप कलमा ले लो, और कलमा को आप बड़े सॉफ्ट तरीके से अगर पढ़ोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट? हाँ, ला हाँ, हाँ, इलाहा इल्लल्लाह, इससे तो कोई भी बच्चा सो जाएगा, एक एक हाँ, एक बुजुर्ग भी सो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली, और एक तो पहली बात है कि अल्लाह का कलाम है, उसमें तो हाँ, आपको वैसे ही इतने एक सूदिंग मिलता है, और एक आप सूदिंग आवाज से हैं, अच्छे से आप टोन से बोलोगे एग्जैक्टली, तो कोई भी हो जाएगा। आप हाँ, इसी तरह के, अगर मैं किसी ऐसी मजलिस में चला जाऊं, या किसी ऐसे माहौल में, या किसी उसे या क्या कहते हैं उसको, किसी मिलाद में चले जाऊं, हाँ, जिसमें जो पढ़ने वाला है वो ऐसा इंथुजियास्टिक हुआ हुआ है, और उसमें इतनी मोटिवेशन हुई हुई है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वो अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, वो चिल्ला इस चिल्ला तरह के पढ़ना पढ़ा, शुरू करेगा, तो इस तरह तो बच्चे को नींद नहीं आएगी ना। नहीं आई, अगर हाँ, अल्लाह बिल्ला, मैं किसी इस्लाम या रिलीजन के बारे में कोई बुरा नहीं, नहीं नहीं, कह रहा नहीं, हूँ, दैट्स नॉट द मैं पॉइंट, मैं हाँ, मैं टोन के बारे में कह रहा टोन के बाद, हाँ, हूँ, एग्जैक्टली, तो राइट? बच्चों, दैट गोज टू द पॉइंट कि बच्चे रिकग्नाइज टोन, तो दैट्स असाइड के। अच्छा, उसमें मुझे एक और चीज आ रही है, एज यू वर डिस्क्राइबिंग दिस, क्योंकि हमारी इस पे एक और मतलब बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर पॉडकास्ट पे हुई थी या हटके हुई थी, कि व्हेन यू वर डिस्कसिंग के आजकल के जो जनरेशन है उनको देख के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अब जैसे दिस फिनोमेना ऑफ स्क्रीन टाइम, दिस फिनोमेना ऑफ कि अब बच्चे को संभालना है तो चलो वो लगा दिया, कुछ टीवी पे कार्टून लगा दिए, वो हमारे बच्चों को तो कोई रिलायंस नहीं थी, इस तरह की, जो इस तरह के लोग बोलते हैं ना कि हमारे जमाने में बिल्कुल। बच्चों को रिलायंस थी नहीं इस तरह की ना, उनको हम उनको मिट्टी पे छोड़ देते थे, मिट्टी खाते रहते थे बैठ के। तो उसमें भी आई थिंक हमारी बात होती थी, उन्होंने कहा था कि यार अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मिट्टी थी,
उस वक्त अगर आपके पास भी ये मीन्स होते हैं, यू वुड बी यूजिंग दोज मीन्स, राइट? उस वक्त हमारे जमाने में अगर टीवी पे वीसीआर पे मेरी याद है मेरी कार्टून लगा देती थी, तो दैट वाज हर गिविंग, लाइक मी गिविंग माय चाइल्ड अ फोन या यूट्यूब लगाना, उसका वो वर्जन था उसमें, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट के you can't treat your child the same way that you were treated, because you were living in different times I mean, I can altogether. give you a straight example, right? If I'm done with my homework, right, and I have nothing to do घर के अंदर, right? I'm talking about 90s के अंदर बात कर रहा हूँ, right? मैं अम्मी को कहता, अम्मी होमवर्क कर लिया, मैं बाहर जाके खेलूं, बाहर जाके, अम्मी कहती हाँ जाओ जाके खेलो, जाओ बाहर जाके क्रिकेट खेलो या जो भी खेलो, अकेले में खेलो, पकड़म पकड़ाई खेलो, जो मर्जी खेलना है खेलो, हाँ, लेकिन मुझसे दूर से रह जाओ. सही. That's her time of taking a break. Okay, fine. I have spent enough time with my kids or kids. हाँ, Right now, I need me time. I need to go cook. I need to go watch my TV. I need to do something, read a book, right, sleep, whatever, हाँ. sleep, whatever. Right? And let's go fast forward. At this time of the era, there is barely any kids, and where we are living, barely any kids are playing on the street right now. Yeah. पहली बात. दूसरी बात है कि अगर हम रिलेट करें, हमारे दोनों के बच्चे इस वक्त ऑलमोस्ट एक ही एज के, और दोनों के कुछ 2 साल के नहीं हुए. Literally weeks apart, हाँ. Literally weeks apart, right? और अगर हमें जरा सा मीट अभी जैसे अभी इस वक्त, हाँ. like literally इस वक्त की हम बात करें, I don't know what your kid is doing, but my kid just is having lunch right now with my wife feeding him right now. So I told her, this is my time, I can go up. Or if Hania is cooking, she's probably going to turn on the TV for him, so then she can cook. I can talk to you. Right, right. All any means available right now. और पहले जमाने में एक चीज और भी मैं कहूंगा कि पहले जमाने की बात अलग है, एंड अकॉर्ड रीजन्स आल्सो. पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारी हेल्प होती थी ये जमाने में. Yep. क्योंकि हम लोग, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, I'm not gonna generalize this. I grew up in a family जहां पर मेरी बड़ी बहन भी घर में है, मेरी दादी भी होती थी, अम्मी भी होती थी, और मेरा पैदा होने के बाद मेरी फुप्पी की शादी हुई है. मतलब मेरी फुप्पी भी वहां रहती थी उसी घर के अंदर, शादी से You पहले. had like unbelievable help. करेक्ट. और प्लस हमारे यहाँ पर नौकर शौकर मासियां सब होती थी, Right. आया बच्चों को देखने के लिए, राइट? हाँ. तो वो एरा ही डिफरेंट था. Absolutely. राइट. तो Absolutely. एनीवेज, अब तो वो इमेजिन नहीं किया जाता ना वो सब चीजें. अच्छा, इस पे we've discussed this, but I also wanted to get your thoughts on this, something that personally interests me a lot, because I always find really intriguing when I read books and even articles or podcasts about human behavior. This is something that, on the side, that really interests me. So I was thinking about, okay, what is the rationale and reason behind a person showing outrage, right? What is that behavior? तो अगर हम एक पूरा एक trend देख रहे हैं, not just in Pakistan but also here in the US, right? You have whatever, someone comes out and says something, और फिर उसके पीछे एक outrage machine आ जाती है. I remember a couple of weeks ago, I think Matt Damon came out and said that I'm retiring the F word, जो is used for homosexuals over here, और जो बुरा word समझा जाता था और समझा जाता है. But he used to say that growing up in Boston, it was pretty normal for him to use that word. So he came out in a statement saying that I'm retiring that phrase, because अब उसपे भी बहुत सारे लोग, like उसके भी pros and cons पे आ गए कि कुछ लोग कह रहे थे चलो अच्छा है, he realizes the bad word. कुछ लोग कह रहे थे कि यार इतना टाइम क्यों लगा इसे realize करने में, this was supposed to be done like centuries ago, whatever, right? तो outrage हर जगह पे exist करता है. तो I'm always interested, what do you think, whatever आपकी उस पे अगर insight है, what do you think is the reason behind कि outrage, इतना public outrage का क्या reason होता है? Like what would motivate you to go on social media and blast someone? वो क्या चीज होगी? What do you think? Why is that happening? I think there are multiple motivation factors on that, right? Hmm. If either the topic of discussion is very personal to you, Okay. right? If the topic of discussion that's going on, Mm-hmm. whether you are not part of the conversation right now or at the time, but when you hear that topic, it's like very personal to you, so you might want to go for your own input on that. Right. That's what I feel. Point number one. If somebody talks to me today about I don't know, just hypothetically speaking, moving to the United States from Pakistan as an international student, how difficult that is. That's a personal topic for me, right? Right. If there's a discussion going on and somebody's talking about completely going, the opposite direction versus what's supposed to be, then I might chime in, because I've experienced that. I have a say in that, right? Or you have interest. I have interest in that, exactly, right? Yeah. That's one motivation factor on that. The other motivation factor is probably, if there's one individual or many individuals that has
least importance or their opinion in their surroundings and the people they hang out with, their opinion has least importance. Right. Then they choose the media as a platform To voice their opinions. to voice their opinions, because then he's not part of, he or she is not a part of that isolated group, right? Where as you know what I'm trying to say, right? There's a group. It's basically a there are form. like 10 people in a group. One person has the least important. Nobody cares about what he or she says. But then that person is like, okay, मेरी कोई बात तो सुनता नहीं है, so I will voice my opinion on a media platform where everyone else is a stranger to me, right? Nobody's going to think that I'm that one isolated black sheep of that group, right? So that's mask basically बन जाता है उनका एक mask basically बन जाता है, right? So this is the third would be a person who is very, very frustrated from his life, right? तो outrage वो डायरेक्ट करता है किसी और के थ्रू, किसी और के अपने अंदर उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है किसी बात की, लेकिन वो इजहार नहीं कर सकता, तो जब उसको कोई टॉपिक नजर आता है बस उस पे बस बोलना है. This is my personal opinion. These things, like thinking right off the hat right now. I think that makes sense, because I was thinking about कि एक और interesting चीज है, एक theory मेरे दिमाग में ये बनी थी, and I was discussing this theory in a different context, but it's important कि मैं उसको यहाँ पर बयान करूँ. So knowledge is power, right? हम ये बात सुनते हैं कि knowledge is very important, that's for power. But sometimes power, अगर आप ज्यादा knowledge किसी को दे देते हो ना, या अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ इस अल्फाज को बोलूँ कि एक्सेस दे देते हो, राइट? व्हेन यू गिव पीपल लॉट ऑफ एक्सेस, सो ओनली वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू यूज दैट. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी गरीब आदमी को बहुत सारा पैसा पकड़ा दूं, तो 9 out of 10 times he will go mad, right? He will like spend left, right and center. उसकी कोई fiscal responsibility नहीं होगी. He will try and fulfill all his dreams in one day. कहेगा मैं गाड़ी भी ले लूं, घर भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, and he will go broke very soon. क्योंकि उसका माइंड उस तरीके से ट्रेन नहीं हुआ हुआ कि टू सी कि अच्छा सही है, मेरे पास ये रिसोर्स आ चाहिए, लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट, लेट मी मेक श्योर कि मैं इसको लॉन्गेट कर सकूं, राइट? इस पूरी ब्लेसिंग को. इसी तरीके से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज है कि यू हैव गिवन एक्सेस टू सो मेनी पीपल एंड सो मच एक्सेस, वेयर यू कैन ट्वीट एट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, where you can, which you have done successfully. Exactly. And where you can tweet at to the prime minister of your country. You can tweet at to various superstars and film stars and all of your anyone, women, men, whatever. तो अब इतनी सारी पावर, अगर इतना सारा एक्सेस मुझ जैसे इंसान को किसी को मिले जिसको जिंदगी में कोई एक्सेस इस तरह से ना मिला हो, तो I will go nuts. I will try and chime into every conversation just so that I get noticed. तो वो जो get notice वाला जो urge होता है एक इंसान का, the urge to feel loved and feel as you said कि एक ग्रुप में अगर उसकी कोई किसी इंसान की ओपिनियन में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चाहेगा कि उस ठरक को या उस गैप को, या उसके दिल में जो ये जो गैप बन चुका है कि उसकी कोई बात सुनता नहीं है या अहमियत नहीं है, तो he will try and fulfill that through different means. And that means कि अगर उसके दिल में वो गैप आ चुका है, तो उसको अगर आपने फुल एक्सेस दे दिया कि हाँ ये 1 करोड़ बंदा बैठा है जो तुम्हारी बात सुन भी सकता है, देख भी सकता है, और आप जाओ कुछ भी करो, then you're gonna come out with the worst of opinions where people will go out and talk about and justify rape, justify whatever, because they just wanna they want to outrage people and then also be outraged themselves, right? Because the outrage sometimes brings the spotlight, unfortunately, right? For example, and इसको इस तरह से देखा जाता है, maybe abrarulhaq said that in a way where he thought के मेरी स्पीच तो बाकी किसी को सुनना नहीं है, मैं कोई ऐसा सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ जिससे मेरी बात नोटिस हो जाए. Whether it was his personal experience, his individual experience, maybe like I said, his mom or his wife puts his kids, or his mom used to put him to sleep by reading, by reciting the kalma. Fine, and you cannot generalize what happened with you. If it happens with you, that's fine, good for you. पर उसका इसमें कोई स्टडी नहीं है कि इसकी कोई स्टडी आज तक दुनिया में नहीं बनी कि अगर आप ये बच्चे को ये यानी कि इस तरह के गाने सुनवाओगे तो उसका ये असर पड़ेगा. यानी कि बच्चे पे तो सिर्फ मेलोडी का असर सुनने में आया हमेशा, और जितनी भी स्टडीज हुई हैं मेलोडीज पे हुई हैं कि अगर वो लाइट मेलोडी हुई या अगर आपने कोई रेजिंग मेलोडीज को चलाई तो उसके हार्मोन्स ज्यादा रेज होंगे, सो यू ऑलवेज गो विद तभी आप बच्चों के जितने भी यूट्यूब चैनल्स लगा दो, they're always like smiley and hyper
colors everywhere, and then like there's no one's trying to rhyme anything, right? अभी मैं कल रात को आपके घर पे वो देख रहा था, वो जो shapes वाली थी, and I was listening to it as we were discussing, तो मेरे दिमाग मेरे जो है ना like third ऐसी vision में ये चीज सुन रहा था मैं, तो nothing was rhyming. वो rectangle से वो square पे चला गया, यानी कि हाँ, last word square पे खत्म हो रही थी, तो और पिछली फिर अगली word triangle पे खत्म हो सर्कल रही आ थी. गया, फिर हाँ होल आ गया, हाँ, फिर पेंटागन आ there was गया। no rhyme कि जिसमें बोलूं कि अच्छा ये कोई पोइट्री हो रही है जिसमें कुछ आप बोलें कि यार ये चीज मेक सेंस. नो, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर दैट, दे आर नॉट गोइंग फॉर राइमिंग, दे आर गोइंग फॉर मेलोडी. व्हाटएवर साउंड्स गुड एंड हैप्पी, Right. If it लेट्स जस्ट makes गेट इट. Abrar or Huck feel better, हाँ. I can change the melody of Willow song and make it sound like a lullaby. My kid would go to sleep probably on ओ that. या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. या अगर मैं आपको एक और चीज या मैं बताऊं कि एबीसी भी ले लूं ना, वो भी हाँ नॉलेज है। वैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ दीन में नहीं रहो, दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस लेके चलो। हाँ, राइट राइट, राइट राइट. दीन और दुनिया को लोगों को बैलेंस लेके चलो, ठीक है। एक रात मैं अपने बच्चे को कलमा पिला के सुनाता हूँ, ठीक है ना। पढ़ा के और हाँ. दूसरी रात मैं अपने बच्चे को उसी मेलोडी के अंदर एबीसी पढ़ा के सुनाता हूँ, वो दोनों रातों सोएगा। एग्जैक्टली. और मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और एक्सपेरिमेंट हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि जो बेबी शार्क की जो मेलोडी है, यू यूज दैट मेलोडी टू व्हाटएवर. अभी मैं एक और हम लोग मेरी बेटी आजकल एक चैनल देख रही है जिसमें उस पे उन्होंने हर चीज पे डाल दी है, उसी मेलोडी पे उन्होंने कुछ 6,000 सॉन्ग्स बना दिए. नॉट जस्ट अबाउट शार्क्स, अब वो इट्स अबाउट लाइक फिंगर्स, इट्स अबाउट लाइक शेप्स, so it's about like whatever. So you can use the same melody because kids love that melody and apply that to different things, and the kid will still love it because in his head you're playing baby shark to him, Yeah. for all he knows, right? He doesn't care about the lyrics. Nobody's, or she, they don't care about the lyrics, they just care about the melody. That's what attracts them. But yeah, I mean, just going back to the behavioral aspect of it, I think a lot of it has to do with, as you said, those three um, aspects as you discussed, but also one of the fourth one would be just access. I think when you have access to so much out there on the internet, it becomes imperative कि आप कहीं ना कहीं जाके उसको उसका गलत इज़हार करेंगे उस चीज़ का. All right, let's close this out, and wanted to quickly get your thoughts on another thing that we discussed. Was slight outrage on our cricket group last night on the team selection T20 World Cup की. अगेन वो भी चीज अगेन लाइक यू सेड कि इफ दैट इन वो चीज इंटरेस्ट करती है हमको, तो वो जब इंफॉर्मेशन मार्केट में आई, ऑल ऑफ अस हैड ओपिनियन एंड हम सब फॉरन टूट पड़े टू गिव आवर कपल ऑफ सेंस अराउंड कि ये गलत है, ये सही है, ये ओके है, ये व्हाटएवर, राइट? तो दैट हैपेंस कि आपको कुछ चीज इंटरेस्ट करती है तो आप फॉरन क्लिक करते हो उस पर और कहते हो कि हाँ मैं उस पर ओपिनियन दूं अपना. लेकिन on that note you just said, right, there is a difference between mass outrage versus हाँ a limited group outrage. हाँ. That और outrage आउटरीच की फिर वो भी पता होती है ना, क्या उसकी कि उसकी लेवल्स उसके भी होता है. वो क्या है, लेवल्स क्या एग्जैक्टली, राइट, हाँ उसकी उसकी नौयत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल क्या एग्जैक्टली, राइट, सारा वो चीज है। तो अगर वो, आई मीन, आई in my opinion that was not an outrage, that हाँ was a हाँ. reaction among 6 or 7 people in that group, in that WhatsApp group, राइट, फैंस. जिनमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों ने रात को इजहार किया था अपना, जैसे राइट आप राइट. हो गए, मैं हो गए, अपना फरूक. हमारे अच्छा सॉरी फरूक नाम, तो मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन टोपी फिर टोपी और फिर टोपी. सुबह के टाइम टेस्ट कैप उनको मिली थी, तो एनीवे फिर सुबह के टाइम किसी और का भी आए, जो बिलाल भाई सब अपने अपने हाँ टाइम के, उनका ऑब्वियसली टाइमिंग डिफरेंस भी था, हाँ. लेकिन दैट वाज जस्ट ए फैंस की बताने के, भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वर्सेस मुझे नहीं पता कि उसी उसी हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें से कितने लोगों ने सोशल मीडिया में जाके, जो टीम अनाउंस हुई है या कहीं पर कोई डिस्कशन चल रहा है, उस पर बहुत अपने आउटरीच डिस्कस किया है। अच्छा वैसे मैं भूल ही गया, सबसे वो तो टीम तो चली गई बैकग्राउंड पे. द बिगर आउटरीच आया है कि व्हेन वी हर्ड कि मिसबा एंड वकार हैव रिजाइंड, तो आई थिंक राइट आफ्टर द टीम वाज अनाउंस्ड एसेंशियली, आई थिंक कि या वाज इट बिफोर, आई डोंट नो. इट वाज, आई थिंक, साइमल्टेनियस हुआ ये, क्योंकि साइमल्टेनियस हुआ है, हाँ, अच्छा टीम एक, अनाउंस के बाद हुआ है. क्योंकि कल रात को आपने, हम लोग घर पे बैठ के डिस्कस ही कर रहे हैं कि हाँ सकलैन हाँ और रजाक और ये सब सारा, हाँ हाँ, फिर उसके बाद ही हुआ. सही सही सही, ये पहले की हाँ बात नहीं, उसके, यू राइट. हाँ करेक्ट। यू राइट. तो इसका मतलब ये है कि तो एग्जैक्टली मैंने अभी देखा था उसमें कि लोगों का ज्यादातर रिएक्शन ऑफ जॉय इज. अच्छा वैसे हैव यू हर्ड के व्हाट्स द इनसाइड स्टोरी, क्या है कि व्हाई डिड क्योंकि अपेरेंटली उसके उसके Today was a, to be very fair, I am one of those the people on that corner where people are more joyous than
sad about this हाँ whole incident. नहीं And नहीं you know, अच्छा उस I have been yeah very absolutely open and very vocal about Waqar was never my issue for me, right? But Misbah has always been an issue for me being. But that's a whole separate discussion that we but can discuss. I think what I read into this whole thing again इसको मैं अगर zoom out करके देख रहा हूँ ना I found it really graceful कि for example ये ऐसा politics में होता है right when you have a new prime minister for example and you're the minister of health or whatever right so if you have a change in leadership and that leadership is not from your party so the honorable thing is that for that person is to resign and say hey you know what now we have a new person coming in they will appoint whoever they want to appoint and obviously me and them are not on the same page I found Mizwa backing out was a reaction to Ramiz Rada's appointment and of probably Ramiz Raja making no secret about his feelings for him, right? And he knew about that. It's like, यार मैं क्यों फालतू में एक चिपका रहा हूँ until I get the sack, right? Right. Why should I give him the Before you get axed, let's just हाँ क्या चलो भाई walk मुझे out पता है आप walk मुझे out वैसे respectfully. हाँ Right. आपको Walk out पता respectfully. आप मुझे निकाल वैसे भी आप मुझे निकालोगे eventually तो let me just leave my post and you bring in your own people if you want But to here's the funny thing, right? Or ironic, if I want to say that, um, if I take my own, I have a cousin who's very old, older. He was older than me. He's like my oldest cousin, but at the same time, I'm very close to him, and he's a huge fan of cricket, right? Mhm. He's not in social media at all. He does not have a Facebook account. He does not have an Instagram account. He only has a smartphone in which he uses WhatsApp to text his friends and his Okay. family. Okay. Okay, he watches cricket 24/7. Wow. Whether it's Zimbabwe versus Ireland उसका or निखिल तो नाम नहीं है cousin का आपके काश होता लेकिन ये कराची में है मेरे cousin he doesn't like to work he does he lives a very relaxed life in his house but anyway he's a huge fan of cricket right तो उनका मुझे मैसेज आया कि this was a very cowardly act ठीक है by Misbah by Misbah and Waqar right leaving right before the World Cup because the right team is so used to your coaching right now that in the World Cup they will go something with very, not with something all of a sudden new coming in, right? And ironically, the same, maybe about a 5-10 minute gap, I watched Shoaib Akhtar's response on Misbah and Waqar he used the exact same word of coward. oh he did Yeah. I didn't see his response actually So his Good. response on it, he said that it's a very cowardly act by both Misbah and Waqar by leaving at the very 25 din before the World Cup happening. It's a very cowardly act. So it was very ironic for me because I know that my cousin is not in social media and he definitely does not follow Shoaib Akhtar. That I can guarantee you that. So two people different in different times, meaning like using the same exact word. So it really differs from your opinion, but your theory that you're coming up. no exactly like mera opinion on Misbah was never okay Misbah is the best coach in the world and he's going to bring us glory and whatever And we know the fact that he was the choice because he was the only choice at the moment, which we have discussed with Wasim Khan as well, Wasim right? Khan, exactly. हाँ, तो हमने उनसे बात भी करी थी तो वो तो था ही exactly right. Would I have loved for Mickey Arthur to continue? Yes, I made no qualms about that. I think हमारी discussion group पे इतनी हुई थी. I was like, okay, there's no way Mickey Arthur goes. But okay, if he's gone, then he's gone. अब मैं उसको घसीट के वापस नहीं लेके आऊंगा. उसके बाद there was nobody, right? तो अगर लोग कहते हैं ना कि यार मिकी आर्थर था ना ऑप्शन, ओ भाई वो चला गया. That was not the option. Now उसके बाद अगर कोई ऑप्शन होता and then उसके ऊपर मिसबा रखते तो आप कह सकते थे आप डिबेट हो सकती है उस पर. But there literally was no one. But anyway, I think जो हुआ whatever, I think एक छोटी चीज है. I don't know उसका कितना बड़ा पार्ट प्ले किया है इस पे, लेकिन मैंने कुछ मीडिया में लोगों को इस पे बात करते हुए भी देखा है. Is the whole isolation bubble and all of this thing. I think so मिसबा ने भी इस पे बात करी थी. मिसबा said कि I don't think I could do this again. The whole isolation of 15 दिन और फिर महीना किसी से नहीं मिल सकते, फैमिली से दूर, ये वो. वकार यूनिस we know for a fact was struggling already. I think in the last couple of tours he had to excuse himself from the last couple of matches of the tour to say कि यार मुझे फैमिली से मिलना जाके I haven't met my family for months because they are not allowed to go outside the biosecure environment, right? So I think एक चीज लोगों को realize करनी पड़ेगी कि ये भी एक factor है because it's a new thing, right? It's not easy. You've done isolation, so you are probably
better than me because I haven't isolated myself. But I took it as this is the process, right? I Right. wanted so But it's so not that's easy. You know this, right? it's It's not not easy, easy. but at the same time, it's not something okay, fine, मेरे साथ हो गया, वापस नहीं होगा, तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा अपनी हाँ family के हाँ. बगैर? नहीं, Because but I was able to do it, right? knowing के even after that, like isolation from your family तो आपकी एक तरीके से थी ना, for months you were away, हाँ, तो मजबूरन. फिर तो तो अब so that did have let's an do impact. this. No, it did, but it was not earth shattering, right? अच्छा, okay. Let's just say that, right? So अब जैसे एक isolation थी when my family was stuck in Canada Mm-hmm. versus I was in US, right? Right. I accepted the fact that the borders are closed. I cannot enter it, but I'm trying to figure it out. I'm going to go. Mm-hmm. Okay. Right. Then, secondly, when I entered, I still had to isolate myself, quarantine, not because I was forced to back then. I did it for my own personal reasons. Right. I walked out of the airport. No Right. one in hell can figure out where I was sitting at that time. Mm-hmm. Right. Right. मैं चाहता तो सीधे जाके चले जाता. लेकिन मैंने नहीं, एक वो तो process फिर out of safety. we are diverting our actual topic for somewhere else about this thing. But the outrage right now, what's going on in this topic is, if it's the bubble that they were facing this thing, I mean that's probably You don't buy that. You don't buy I don't buy that that. reason. I don't You buy don't that. buy That's the media. That's they want to use. It's an नहीं नहीं, scapegoat topic. मिसबा खुद ने बोला था, तो Wait, you're saying कि it's मिसबा, an हाँ. scapegoat topic for Misbah, and not to mention that he's resigning because of Ramiz's appointment. That he will be probably will got a sacked or axed, right? Whatever terms you want to use on that. So it's better to walk away now respectfully rather than waiting for him to fire him. I think This he is would the have, reason. I think he should have come out with that statement, ताकि उस पे अपनी ऊपर बल्ली ना लेता. वो कहता क्या है, देखो, there's been a change in the hierarchy and I don't share the same vision, so I'm backing away. अब Correct. World Cup, हाँ, although I do agree कि I think leaving before the World Cup, like a month before the World Cup, is not ideal at all. I also think Ramiz is not ungraceful. He would not have sacked someone a month before the World Cup unless he had have like a world class replacement, like an Andy Flower or whatever, right? And there's no Andy Flower. There's Abdul Razak and Mushtaq. Even I would have considered David Watmore as Dave Watmore तो as one एक of कुछ तो हाँ, तो एक आप plug and play वाला तो option होता ना कि चलो एक को निकाल दो. But I think Ramiz would have had the decency to said, okay, you know what, World Cup होने दो, कुत्ते की तरह उसके हारने बाद दो हमें, देखते हैं. हाँ, कुत्ते की तरह हारने दो हमें, फिर हम बाद में देखेंगे. हाँ. और अगर आप जीत गए तो फिर बाद में वो भी बाद में देखेंगे. और मेरा point of view and the way I think about how leaders and coaches and motivational speakers are, अगर आप किसी को motivate कर रहे हो, अगर आप किसी को coach कर रहे हो, are you leading from the front, right? Then you have to be very headstrong. You are the one who's actually telling the rest of the team, dude, calm down, take it easy. We're going to get this thing done. वो एक motivation आप दे रहे हो. If you are using the scapegoat topic of कि मैं isolation के अंदर I got really weak, then you are not being that motivation and That inspirational leader, an yes. aspiration leader for that coach. I think Anyone can break down on that. Anyone can वो break तो in ठीक this है, thing. लेकिन the pressures Misbah has gone through, we know he is hated by the media from day one. ठीक है, तो he's not like कि कोई I know it's media's not just the darling. media. I think it's everyone. I mean, हाँ, I don't तो want to use the exactly. word hate, but even So he was exactly. So him functioning under that constant pressure where अगर वो एक loss कहीं पर भी हारेगा ना तो उसके ऊपर बल्ली, और अगर वो कहीं जीतेगा तो it's never going to be considered any good. For example, that victory series win in against कहाँ पर जीते थे हम लोग? South Africa at home and away, right? That doesn't get talked about because क्या वो बच्चे थे और बच्चों को हरा दिया ये वो. But again, I think जहाँ पर credit होता, for example, वकार यूनिस के ऊपर बहुत लानतान होती है, but nobody discusses the fact कि आपके जो prime bowlers अब बन रहे हैं, Shaheen Afridi has improved tremendously under him, right? We're looking at him now like he's growing into a big bowler. Hassan Ali का जो return आया is amazing, fantastic return. So he should be getting some sort of a, उसकी तारीफ उस चीज पे बनती है जहां पर उसकी अगर criticism बनता है वो अलग अलग चीज है. I mean, 10 minutes पहले मैंने कहा I had never had a beef against Waqar. हाँ. My beef was always against Misbah because of his mindset, his defensive mindset on cricket. Fine, he had a mindset of being a player. He should have changed his mindset as a coach, being in which era we are living in right now. But anyway, long story short, hopefully,
Zonera we're sleeps used to. tonight in peace with whatever melodies he wants to hear and sleep. And so would I do the same with Zidane. And that's gonna yeah. So that's still going to happen. Yeah. There's no canceling of Baby Shark over whatever, right? So that's never gonna happen. And to be very fair, my son goes to sleep without a melody. Exactly, same here. We don't have to sing We to don't her. have to sing or lullaby or anything. He goes to sleep. All he needs is his milk bottle and somebody sitting next to him. So then he falls asleep and we walk out. So he doesn't need melodies. Yeah, But our maybe our some do, which kids I'm sure are agnostic. as parents, to be very fair, right now, I would probably do or go through any means possible to give comfort to my child. Absolutely. As a parent, I would do that. So then, if I have to recite the Quran, if for that I have to recite Baby Shark, I'm not comparing those two. I'm just saying whatever means Whatever means necessary. or I have to sit next to him for hours and hours so that he goes to sleep in peace. So then I can go to sleep in peace so that I know that my son is relaxing. That's what I would go for. Exactly. So it's not about worlds colliding, worldview colliding. इस तरह कुछ चक्कर नहीं है. I could have taken the context of Below the Car in a very different way, where in the movie Khuda Ke Liye, the Maulana Sahab used this reference ke, असत जाना है below the car, किने किने जाना है below the car, below के घर जाके करना क्या है below के साथ, right? I can use that context too, right? Against that song. ये बोला था क्या? ये तो खुदा के लिए की मूवी के अंदर एक डायलॉग है ना. हाँ, I don't remember that. When खुदा के लिए, if you remember this, I don't know if you remember this or not, probably you don't. When the Maulana Sahab was trying to brainwash Fawad Khan into converting himself from leaving music and coming into becoming a tabligh, shouldn't say tabligh extremist, right? के ये जो गाने हैं, अबरार का गाना है, असा ते जाना है बिलो द कर, किने किने जाना है बिलो द कर, भाई ये बिलो के घर जाके बिलो के साथ क्या करना है लोगों ने जाके, right? And this whole thing was changed by Shan when Fawad Khan went to his older brother saying, ये मौलवी साहब ने कहा है गाने के बारे में, तो कहते हैं कि फिर मैं इसका वर्ड चेंज करता हूँ, बिलो से मैं अल्लाह का घर कर देता हूँ, असा ते जाना है अल्लाह ते कर, किने किने जाना है अल्लाह ते कर, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट अब चेंज हो गया, अल्लाह के घर जाके हमने इबादत ही करनी जाके. That's funny. Right? That's funny. Yeah. So anyway, so it all depends on at the point and the moment of how you want to, calm someone down or there's a context. So anyway, abrarulhaq, maybe it was, you're right. He used that one phrase, one line just to get hits on his YouTube video, or meaning his speech, or he just said it because of his own personal experience. But he should not generalize this statement among the masses of wherever we are sitting. And then also the masses, in my opinion, shouldn't overreact to every goddamn thing. यार कभी ना जाने दिया करो, कभी कुछ भी हो जाए ना, कभी कह के आगे बढ़ जाया करो कि अच्छा खैर है जो भी है बोल रहा है. उसको Formula 1 की गाड़ी में बिठा के ना दूसरे पैसेंजर के साथ. Formula 1 में वाकई में वो तो she was relentless यार, she was absolutely relentless. Like वो रुकी नहीं रही थी, मैं कह रहा था प्लीज रुक जा प्लीज रुक जा और नहीं बोलो. Like kudos to the guys sitting in front of her who actually kept a straight face and like, नहीं वो फॉर्मूला अच्छा अब एक्सपेरिमेंट कर लिया, नहीं हाँ अब चलाते हैं. अभी उसी मामले में अब तो मीम्स पे मीम्स आने शुरू हो चुकी हैं उसके ऊपर. Oh God, यार. I will share with you a couple of them. But that was super hilarious. Again, इस पे भी कोई रीड ना करे कि यार औरत का मजाक. I mean, come on यार, थोड़ा सा लोगों को चाहिए मजाक बर्दाश्त कर लिया करें. Like treat a joke as a joke and move on. Nothing and not everything has to be dived into और उसके अंदर से कोई सीक्रेट मायने निकालना है कि अच्छा जैसे बेबी शार्क को लोग कहते हैं बेबी शार्क के अंदर कोई सीक्रेट कोई चीज है कि जो बच्चों को वो कर रही है, उनका माइंडसेट चेंज कर रही है. I'm like, what, liking sharks? Are you kidding me? No. Let's just relax. Sometimes कोई बड़ा गेम प्लान नहीं होता हर चीज के पीछे, कुछ चीजें ऐसी रैंडमली बन जाती हैं. Right. So anyway, with that would like to wrap up the podcast. Don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel and also on our audio platforms like Spotify and Google and Apple Podcasts. We'll see you guys back with another one. Cheers. Thanks, Kuwait. Bye.